अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है ना राइटिंग मॉड्यूल को डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन राइटिंग मॉड्यूल एंड आल्सो सम इम्पोर्टेंट strategy and tip that actually can help us to tackle these question. So first I will share my screen. My screen is visible. Yes, sir, Sudden we is do. Yes, sir, we do. okay, so now we can start. सर लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो गई है। मैम रिकॉर्डिंग है आज। ओके। So today we will discuss about writing module. So in writing module we have two tasks, task 1 and task 2. The first thing is that for writing module we have 60 minute, and in 60 minute we need to complete two tasks, task 1 and task 2. So the task 1 basically relevant to report we will discuss in the next few minutes. And the first is that task 1 you should need to write minimum 150 word in 20 minutes, and for task 2 you should need to write 250 minimum word within 40 minutes. The important thing is that task 2 carries more weight in scoring. Mean your main purpose to improve your uh, task 2, but also with the task 1. Basically, task 2 has more weight as compared to task 1. The writing task 1, we will here discuss about academic. Basically, two type of IELTS, general and academic. So we will talk about academic writing task 1. It's about describe visual information. So basically we have three or five type of writing task 1 question. The first one is that line graph. So basically in line graph you can see this type of question can you see in your exam. So this is a line graph, and the second type is bar chart and pie chart. So in pie chart you can see this graph in your test, and the table question is look like this, and the map you can see this is the type of map, and this is process diagram. So first you should know the types of the task 1, so then you can easily understand important point how we can write these types during our test. So basically, when you start writing, you should focus on some important thing. The first thing is that summarize information, compare data, describe trend. What is it mean? For example, this is your line graph. So in line graph, you should need to write your introduction first. In the introduction you just paraphrase the question. For example, the graph below show the hospital admission for five show the hospital admission for five hospital in a European country. So in introduction you just need to paraphrase your question, and then you need to write overview. So in overview you should need to write which thing is more dominant and which thing is at the lowest point. So you just try to write overall point of view rather than to explain everything. So after that you should need to write two paragraph
In the first paragraph you can write half of the information, and in the second paragraph you can write further information that remaining in the first paragraph. So how we can write, we will also discuss about these point when we will practice. So here I just you gave you the overview. Mean you need to compare data and describe trend. You should not need to give your own opinion, reason, and conclusion. And if you start to give your own opinion, for example, these are the uh, type of question relevant to our daily life. Maybe some of the question you see in your test, and just try to give your own idea and own viewpoint, so that point actually decrease your overall band rather than to help you. So try to avoid your own opinion, reason, or conclusion when you tackle task 1. So we think you should to understand, there are four important thing you need to understand. The first one is that introduction, second one overview, then body paragraph 1 and body paragraph 2. So these four important point you should be know, then you can easily write that. So in the introduction, you just paraphrase the question. So in overview, you should write the main trend important point rather than to write everything. So in body paragraph, you can write some important keyword, and in body paragraph 2, you can write remaining data. You can start your overview, mean the second part, by using these phrases. Overall, it is clear that in general the data show that a noticeable trend is that. So you can use some general phrases for more clarity. So we think students should avoid. Most of the student do not Most of the student who get low band score in task 1, they do not write overview. Copying the question means they write the question same in the introduction rather than to paraphrase it. They also start giving own opinion and listing number without comparison. For example, if student write the same title of the line graph in the introduction, so that may be considered wrong marking. And the second thing is that no explaining and no describing about overview. And the second thing is that start giving their own opinion in the line graph. So these are the point actually can decrease the overall band score, and also listing number without comparison. For example, if anyone from here just describe about the bold line, for example, this is the line of uh, Birdly. So if anyone start in 2020, in 2004, the line start from 2000, and at the end describe about reach at 2000 plus without describing the comparison of this line with other one. So it can be considered as a negative. So if you want to get more score in the report writing, you should be write every sentence with a comparison and also more appropriate relevant information given in the line graph. So after that, we will describe some information relevant to writing task 2. What is task 2? This is essay writing and test your ideas, organization, grammar, and vocabulary. So, common essay types. We have five common essay type. First one is opinion essay, second one is discussion essay,
third one advantages and disadvantages, and fourth one is problem solution, and last one is two-part question. The last one is less important, but you should be know about it. Mean in opinion essay how the question can come and how you can tackle it. For example, this is the statement: some people think that children should start school at a very early age. Then they ask, do you agree or disagree? So if they ask you about do you agree or disagree, so you should be know that this is opinion essay, and what you should need to do we will also discuss further. So just here you know that the type of question you can see. In discussion essay, some people believe that technology has made life easier while others think it has made life more complicated. So discuss both view and give your own opinion. So you can know that this is a discussion essay. And similarly for advantages and disadvantages, more people are working from home, discuss the advantages and disadvantages for this trend, or they may can also be asked about disadvantages and advantages and disadvantages and which outweigh the other. And in this statement you should also need to describe advantages is greater or disadvantages is greater. You can choose any side. Problem solution: many cities are facing traffic congestions problem. What are the causes of this problem and what solution can you suggest? So if you see this statement, so you can easily know that this is problem solution and two-part question, in which some people prefer to travel alone while other prefer to travel with friend. Why do people have different preferences and which do you prefer? So these are the type of writing task 2 and how you can tackle these question one by one. So first I will just describe here, so then I will also further explain more about it. For example, in an opinion essay, the first thing you should do introduction, and the second one is first paragraph, second paragraph, and conclusion. So basically you need to write 4 paragraphs. And if you structure your essay in 4 paragraphs, so you can easily write each point in a well organized way. For example, in the introduction, you just need to paraphrase your statement, and then you can describe do you agree and disagree. So this is your thesis statement. And similarly, uh, if they ask about discussion essay, so discuss both view and give your own opinion. So in this essay you need to write both view and also give your own opinion during writing. For example, in the first paragraph you can give the opinion of one side, and in the second paragraph you give the opinion of other. And if you agree one of them, so you can also add in each of the paragraph. For example, if you agree with the first paragraph, you can write there, and if you agree with the second one, so you can write your statement that actually show your agreement with the essay. First, I think we should know how we can write, then we further know about it. Basic essay structure introduction. So what you need to do in the introduction? In the introduction, you first paraphrase your question and give thesis statement. What is mean of thesis statement? Give your opinion plus main point will you will explain why your opinion. So you add something with your opinion, so that is your thesis statement. And in body paragraph you can write your topic sentence and then explain that point and then give the example of that point. So usually student do mistake. What they do, they write multiple topic sentence in each paragraph. For example,
if your essay is relevant to about technology. So they describe about the impact of technology in a health sector, and then they describe about the effect of on education. So here is two topic sentence. So in that case, student cannot describe both sentence in a detail. So if you cannot describe both sentence in detail, so what is it mean? You cannot actually develop your idea. So it is important you just write one topic sentence in each paragraph and explain that sentence. For example, if you write sentence about health sector, you can say that one many people believe that technology is really very helpful in health sector, because doctor can use various technique to diagnose the diseases of the patient, and then you give the example of that statement. If you just write the statement and then start other statement, so in that scenario your band score in writing will decrease. So you just need to write one sentence in each paragraph and explain that sentence and give the relevant example to that sentence. So then your task more perfect. So in the second body paragraph, you can use the same technique, write your topic sentence, then explain it and example. And last one is conclusion is also important. So in conclusion, most of the student start giving a new opinion and new information in the conclusion, but it is really important you know that which thing you need to write in your conclusion. For example, summarize ideas and restate opinion. What is mean of summarize idea? Meaning briefly mention the main point you discussed in your body paragraph 1 and 2, and remind the reader of your argument without adding new information. You do not need to write new information, you just need to write the main point you discuss in paragraph 1 and 2. Restate your opinion. Clearly repeat your main stance or viewpoint from the introduction using different words. You do not need to give a new viewpoint and new idea in the conclusion, just to paraphrase it. Reinforce your position so the reader know your opinion. Answer all point of the question. Use clear ideas, not memorizes phrases. Mean many student just try to memorize some available templates, so it is not good thing, because if maybe anyone use any template from the internet, the chance is also other student can also use. So it can be a negative impact for you if multiple student in the same center use the same template. So uh, it is a negative for you. So you should be write your own sentence and develop your own way of writing. Giving example actually improve your band score. Okay, so here one important thing is that, so for essay, how many sentence you need to write, it is really important for you, because if you know about the proper roadmap, so then you can easily design your essay in a more perfect way. The first thing is that usually you can write 50 word in your introduction. 50 word mean if you write two or three sentence, so your word approximately round about 50. For example, first you paraphrase your question, and then you tell about your statement, your opinion. So you can write this information in 2 to 3 sentence. So after that
your word approximately around about 50. So in the first paragraph, what you should need to do, you just need to write 4 to 5 sentences in each paragraph. For example, first you write your topic sentence, first sentence, and the second you can explain it. So this is your second sentence, and then you give the example of that sentence. So how many sentence you write? Three sentence. And the furthermore you can also give the result, mean what is the result of your thesis and your topic sentence. So approximately 4 to 5 sentence you can write here, and your word count can be reached to 75 to 80 word here. So similarly you can write 4 to 5 sentence in body paragraph 2. So your word again 70 to 80 in paragraph 2. So in conclusion you just need to write two or maximum three sentence, not more than that, not more than that. So if you first summarize the idea you explain in body paragraph 1 and body paragraph 2, and then give your own opinion, so you can just write two sentence here. So approximately 30 word you can write, and if you count these word 30 to 40, so you can easily reach a 250 overall word. So I personally recommend you just need to write a maximum, I will say 270 word maximum, and minimum you can write 260. Mean if more you write, more mistake maybe you can uh, do during writing, because the minimum limit is 250, and if you cross that limit, so that is enough for you. And if you just try to write more and more and increase your word limit 300, so maybe more a mistake you do during writing, so your mistake definitely count. Mean your world if you increase 300, so it does not matter, but if you do more mistake, so that will be count and against your band score in a writing. Okay, so if you use that approach, so you can easily reach uh, maximum word you need to write. Okay. Yes, student, you have any question you can ask. Okay. So when you write your essay, how many things you should be follow that actually increase your band score? The first one is that your task, achievement, and response. What is it mean? Is it mean you describe each thing that mentioned in your uh, question? For example, here we come in opinion essay. Some people think that children should start school at a very early age. Mean if you give introduction and also explain your agreement and disagreement in first paragraph, second paragraph, and give your opinion, and you describe each thing relevant to the essay. So this is count your task response. Mean if you start giving multiple sentence in the single paragraph, so you cannot achieve your task response, so that thing actually also disturb your point to coherence and cohesion. First you need to write 4 paragraph relevant to your task, relevant to your essay, and if
each sentence is according and relevant to the question, so your task 1 will be okay. So then you need to also work on point 2, coherence and cohesion. What is it mean what you write, everything uh, engage with each other. For example, if you write one sentence in first body paragraph and the second one link with the first one, so this show that they engage with each other. But if your sentence do not uh, engage with each other, so this point may be uh, affect your band score. Mean if you write four sentence, so first one logical paragraph, you write four paragraph, and then you explain each paragraph according to the essay, according to the task response, and you also use linking word that show the engagement of the sentence. For example, if you explain any point and that you use example that relevant to that point, so mean you use a linking word for example, and that for linking word help to connect different sentence with each other. So then your point 2 will be fulfilled. After that you also need to satisfy your point 3. Lexical resources mean you use appropriate vocabulary relevant to your essay and correct word choice. For example, if you select any word just to show advancement in vocabulary, but that word may not relevant to the sentence and not relevant to the essay, so it can also affect your band score. And the last one is that grammatical range and accuracy. You should need to write a variety of sentences type, fewer error. Mean you should need to write simple sentence, compound sentence and complex sentence. But if you write compound and complex sentence with the error, so it is better you write simple sentence rather than to write complex with the error. Clarity is more important than complexity. Okay, so you should be understand about this point, otherwise it can be create problem for you. Closing statement mean IELTS writing is not about difficult word, but about clear structure, relevant ideas, and correct language. So if student you have any question relevant to our discussion, you can ask, then we will move further. Okay. Many times students say that we actually face problem in a sentence, so we will also prepare a list that can help student to correct their tense uses, and they can also use that material to improve their simple sentence and also improve their complex sentence. So this is important, and if student do not know about correct form of sentence, so maybe it's difficult for them to get a good score in a writing. So it is important for a beginner to first correct their tense use, and after that practice essay. So these are the list where we write five important type of sentence. First one is present simple. How you can write? Here is a complete structure. The second one, we will also share this list on the Slack. You can download from there and use them appropriately. Here is a complete way, and also what mistakes student do. Some practice set. You can also use it. Example of singular subject, plural subject. You can also. The second sentence is present continuous.
how we can write. Here is a proper structure how you can make present continuous, and some important point student actually mean. When do we use present continuous? Very simple. So we also add this information on which point you can use in more appropriately. The past simple. Here is a simple structure, you can follow it. The most important thing I want to show, mean here we just write five tense that are actually important for you, so you can also practice these. The most important thing students usually do not know when we talk about compound sentence and talk about complex sentence. The compound sentence join two simple sentence using and, but, or, so. What is the structure of it? Sentence one plus using and, but, also plus second sentence. So this show that compound sentence. For example, people like online shopping and. So here we use and. So and actually connect the first sentence with the second one. So this is the form of compound sentence. And many companies now offer it. And the second, the price increased but demand remained high. So basically we use these words to connect two different sentence with each other. So this is the form of compound sentence, and if you practice it, so definitely after a few weeks you can easily use these compound sentence appropriately. And the second one is complex सर sentence. इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी कंपाउंड सेंटेंस में। Yes, ma'am. तो ये जो वर्ड्स हैं एंड बट और ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जिनको हम फैन वॉइस के एब्रिविएशन से याद कर सकते हैं। Yes, एफ ऐसे ही फॉर मैम. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। और दूसरा ये कि Yes, ये जो फैन वॉइस हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोनों सेंटेंसेस हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, ये याद रखने वाली बात है। तो दोनों yes, ma'am. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही ऐड करने के लिए या कंबाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो अभी आप डिस्कस करेंगे उसमें सिनेरियो डिफरेंट है, उसमें एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, मतलब बेसिकली दे आर क्लॉजेस। Yes, ma'am. The second type is complex sentence. Complex sentence has one main idea, one extra idea that depend on the first idea. Structure mean main sentence plus dependent clause. So basically when you practice these sentence and first you know about the structure of complex and compound, then you can easily use in your essay writing. So these are the word you can actually use in your complex sentence. Here is also, for example, how we can connect to different phrases, clauses. People prefer online shopping because it is convenient. So basically when you use different phrases and clauses, mean one of the clauses depend on other or one are independent. So when you start practicing these complex and compound, so you can easily use in your essay. Other important thing is that if maybe here, here we also add some important point about article. Sometimes student also face problem to use the correct use of article. So you can also understand about article.
Basically, article tell the reader whether you mean something specific or something general. So a and one are any non-specific used before singular and countable noun. For example, car, an apple, a university, and we use the by specific or already mentioned thing used for specific people, places, or thing the reader know about. I mean, if any specific thing, you can use the before that noun. For example, the car you bought, the environment, the government, and where we cannot use article with plurals or uncountable noun when speaking generally. For example, forest or important, pollution is bad. So इसमें सर मैं basically, ऐड if you, करूंगी, सर yes, यहाँ पे ma'am. मैं ऐड करना चाहूंगी, मटेरियल नाउन्स जैसे हमारे पास है उनके साथ हम द आर्टिकल यूज नहीं करते नॉर्मली, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो हमें याद करनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड है, इट्स अ मटेरियल नाउन, हम उसके साथ द आर्टिकल नहीं यूज करते. बट फॉर एग्जांपल मेरे कबर्ड में कोई गोल्ड ज्वेलरी है एंड आई एम रेफरिंग टू दैट, तो मैं उसके साथ द यूज करूंगी. The gold which Yes, is ma'am. in my Mean, cupboard needs to be sold out. तो ये mean, एक्सेप्शंस हैं जो हमें याद करनी होती हैं. yes, if the reader knows something about, they can use the before it. The thing the reader know about it already know means something actually are not specific if we already not know about it. But if some general thing we already know about it, so then we can also use the before them. Okay, so basically when you use correct use of article, so this thing also help to increase your band score. Mean थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आप करेक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपकी हेल्प करती है आपके जो इम्प्रूवमेंट और जो आपका बैंड स्कोर है उसे इंक्रीज करने में, कि रैदर दैन जस्ट आप इसी के ऊपर फोकस करें कि मैंने डेली एक ऐसे एक रिपोर्ट लिखनी है. अगर ये जो चीज़ें हमने बताई हैं इन्हें आप यूज़ करें, कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करें, कंपाउंड सेंटेंस यूज़ करें, करेक्ट आर्टिकल यूज़ करें. और सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट, सम टाइम वी डू नॉट सेलेक्ट द राइट वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो भी अफेक्ट करता है. तो आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड करेक्ट यूज़ करें तो ये ओवरऑल आपके जो है ना बैंड स्कोर को इंक्रीज करती है. अदर रूल में भी दैट इज आर इनफ. ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, here are some important vocabulary relevant to your task response one. So you can also read these important thing. Okay, we will also share this these material on the Slack. You can use it. So my point is that do not try to memorize any template from anywhere. It is not a good thing. You just try to write by using your own style. Okay, so now here we will read some important sample essay. For example, अगर आप एज अ बिगनर है तो आप ये ना करें कि आप जस्ट जो है ना राइटिंग स्टार्ट कर दें, ऐसे आपने लिया उसे स्टार्ट कर दें. आप सबसे पहले जो ऑलरेडी आपके पास ऐसे हैं जो प्रीवियस रिकॉर्ड में हैं उन्हें उठाएं, उन्हें रीड अप करें और देखें कि एक जो बैंड 8 ऐसे है वो कैसे लिखा गया है, उसे कैसे टैकल किया गया है. तो जब आप उसे रीड करें तो जब आपने रीड करना है आपने एक्टिव रीडिंग करनी है. बेसिकली टू टाइप ऑफ रीडिंग, वन इज़ अ पैसिव रीडिंग एंड अदर वन इज़ अ active reading. In a passive reading you just read and understand some basic information relevant
to what you read. But the active reading is mean what you read, you try to understand why this word is here and why uh, the sentence and why the different information available here. You try to understand everything during reading. So this is mean of active reading. So आपने क्या करना है, आपने जो बैंड 8 या बैंड 9 7 प्लस का ऐसे है उसे रीड अप करना है और देखना है कि कैसे ये राइट अप हुआ है. तो these thing actually help and train your mind to follow that structure. Okay, so here we read more people are working from home. Discuss the advantages and disadvantages of this trend. Mean the question is about more people are working from home. So what are the advantages and disadvantages and which outweigh the other? Mean आपके पास advantages ज़्यादा हैं या आपके पास disadvantages ज़्यादा हैं जब पीपल काम करते हैं घर से, लाइक रिमोटली. मैनी पीपल आर वर्किंग रिमोटली from different places rather than to physically join the office. So the first thing is that just paraphrase your question. What is your question? More people are working from home. So here in recent year, working from home has becoming increasingly common. The second thing is that this trend has both advantages and disadvantages, but in my view, the benefits outweigh the drawbacks. Mean first you write your uh, main sentence, paraphrase the question, and then write the thesis sentence, thesis statement, in which you basically show your stance about the statement. Okay, so in the first paragraph I already uh, said you just need to write one sentence, one main sentence in each paragraph, and then elaborate that sentence rather than to write a multiple sentence in each paragraph. The first sentence, first in the first paragraph, you describe about the advantages of working from home. The first one is that your topic sentence, flexibility and work-life balance. So in the first sentence, one major advantages of working from home is the flexibility it provide. Mean this is your topic sentence. And then you explain in the second sentence, you explain your first sentence. Employees can manage their working hours according to personal need, which allow them to attend to family responsibility or pursue hobbies. So this is the explanation of your first sentence. And then the example. For example, a parent can work in the early morning and spend the afternoon with children, maintaining a healthy balance between professional and personal life. And then the result of your topic sentence. The last one is your result. This flexibility often improves job satisfaction and overall productivity. So how many sentences you write in paragraph 1? Almost 4 sentences. So if you understand about the basic pattern and how you can write the best response, so definitely that thing help to increase your band score. And in the second paragraph, you describe about disadvantages. Isolation. A significant disadvantage is social isolation. So this is your topic sentence. And the second one is working remotely reduce face-to-face interaction with colleague, which can lead to feeling of loneliness and affect teamwork. Then example. For instance, employees may miss out on informal discussion or brainstorming session that often spark new ideas.
This lack of social contact can also impact mental well-being, especially for those who thrive in collaborative environment. So here you just first write a topic sentence and then you explain that sentence and then you give the example relevant to that sentence, and at the end you show the result and effect of your topic sentence. And finally, in your conclusion, you just paraphrase what you write in body paragraph 1 and 2 and then your stance. Although working from home can result in social isolation, the flexibility it offers and the improvement in work-life balance make it highly beneficial. Therefore, I believe that advantages of this trend clearly outweigh the disadvantages. So, if you start to write multiple sentence in a one body paragraph, so you cannot complete your task response, and this thing also affect your coherence and cohesion. So coherence and cohesion mean how your ideas well connected with each other. Mean if your first sentence, अगर आपका जो पहला सेंटेंस है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा और सेकंड आपका पहले के साथ एंगेज नहीं हो रहा, तो मतलब यहाँ पर आपकी जो कोहेरेंस है वो अफेक्ट होगी। ओके, मतलब जब भी आपने ऐसे राइट अप करना है तो आपने ये जो 4 पॉइंट है इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है। दीज आर द 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल जब भी आप अपना ऐसे राइट अप करें तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, उसे पूछ सकते हैं अपने ऐसे के बारे में, तो वो क्लियरली आपको बता देगा कहाँ पर आपने लैग की है। आपने पॉइंट 1 टास्क रिस्पॉन्स अचीव किया या नहीं, आपका पॉइंट 2 आपने उसे फुलफिल किया या नहीं, आपने पॉइंट 3 फुलफिल किया या नहीं, और इसी तरह जो आपका लास्ट वन है उसे आपने कंप्लीट किया या नहीं। अगर जस्ट आप एक चीज़ के ऊपर अपनी फोकस करेंगे सिर्फ पॉइंट 1 के ऊपर, बेसिकली जब हम रैंडम कोई टेम्पलेट मेमोराइज कर लेते हैं तो हमारी फोकस सिर्फ होती है टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर कि हमने जो मिनिमम वर्ड है उन्हें हमने इंक्रीज करना है। तो इसलिए जो है ना स्टूडेंट टेम्पलेट को मेमोराइज करते हैं और फिर सम स्टूडेंट फिर काउंट करते हैं कि वो जो उन्होंने टेम्पलेट मेमोराइज किया उसमें कितने वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पलेट किसी ने याद किया 100 वर्ड हैं या 150, तो देन उसकी फोकस है कि मैंने जस्ट 100 वर्ड मज़ीद उसमें जो है ना ऐड करनी है और मेरा जो है ना ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली दैट थिंग एक्चुअली डिस्टर्ब coherence and point 3 lexical resources and grammar. So you should try to fulfill all these 4 points, because all these 4 points separately सेपरेटली जो है ना एग्जामिनर इन्हें चेक करता है जब भी वो आपका ऐसे जो भी आपने राइट अप किया है वो उसे एनालाइज करता है। तो इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस करें उसे आप चेक कर सकते हैं चैट जीपीटी और अदर सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि आपने ये जो 4 पॉइंट हैं, तो जब आप वहाँ पर लिखेंगे आप साथ लिख सकते हैं गेव मी ओवरऑल बैंड स्कोर। तो जब वो ओवरऑल बैंड स्कोर देता है वो बताता है कि आपने टास्क रिस्पॉन्स में आपके कितने बैंड हैं और कोहेरेंस में कितने हैं, लेक्सिकल रिसोर्सेज में कितने हैं, ग्रामर में कितने हैं। तो आपको अपने वीक एरियाज का पता चलता है। तो बेसिकली जो आपकी मेन इम्प्रूवमेंट है वो आपकी प्रैक्टिस से होती है, ना कि कुछ टिप्स और टेक्निक और स्ट्रेटजी को यूज़ कर कर। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने ऐसे को वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर कर उससे पूछेंगे तो आपको इजीली अपने वीक एरियाज का पता चल जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई और स्टूडेंट भी कुछ ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। तो ये हमें पैराग्राफ्स में हेडिंग्स भी देनी है जो यहाँ पे मेंशन है आपके डॉक्यूमेंट में।
कौन सी इज मैम? इट नेसेसरी? पैराग्राफ नंबर 1 and 2, बॉडी पैराग्राफ, उसमें हेडिंग्स हैं, तो क्या वो नेसेसरी है, हमें देनी नो होती मैम, हैं? नो नो, वो नहीं देनी है आपने। ओके। जस्ट यहाँ पर शो की है, जो है ना, आपको एक ओके आइडिया हो ओके। जाए कि ये पैराग्राफ वन है, ये पैराग्राफ वन है। तो बेसिकली जब आप सिर्फ एक नहीं सर, ये वो नहीं नहीं सर, मैं एडवांटेज कॉलन फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ये हेडिंग इसका मैं पूछ रही हूँ, बिकॉज रिलेटेड, नहीं इट नहीं इज रिलेटेड टू पैराग्राफ, तो नहीं, हमें नो, देनी होती है। दिस इज जस्ट योर टॉपिक सेंटेंस, जो मैंने नीचे जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस हम डायरेक्ट अपना सेंटेंस लिखे ना, जो टॉपिक सेंटेंस है, ऊपर हेडिंग की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ से आप कर सकते हैं, वन मेजर ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम। ओके। मतलब कि स्टूडेंट जो मेन मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो मल्टीपल सेंटेंस जो है ना, वो राइट अप कर देते हैं ईच पैराग्राफ में। ये असल में जो है ना, उनके ओवरऑल बैंड स्कोर को अफेक्ट करती है। तो जब आप सिर्फ एक टॉपिक सेंटेंस को लें, फिर उसे राइट अप करें, उसे फर्दर एक्सप्लेन करें, उसके रेलिवेंट एग्जांपल दें, और फिर उसके रिजल्ट, उसकी वजह से जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर है, दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफन इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। मतलब आपने कंप्लीट उसे जो है ना डिस्क्राइब कर दिया एक पॉइंट से, आपका टास्क की रिस्पॉन्स भी इसमें क्लियर हो गया, और आपकी यहाँ पर कोहेरेंस भी जो है ना वो भी क्लियर हो गई है। तो मतलब आप दोनों में इजीली 7+ आपके आ रहे हैं। और ग्रामर अगर आपने ठीक लिखी है, चाहे आपने सिंपल ग्रामर लिखी है, सिंपल सेंटेंस लिखे हैं, तो उसमें भी आपका ठीक आ गया। फिर आपकी वोकेबलरी अगर वो रेलिवेंट आपने लिखी है इस पॉइंट के, तो दैट इज आल्सो is a plus point, so you can easily get 7+ in essay if you follow this point. अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, फिर हम जो है ना सेशन को एंड करते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जी सर। मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये चीज की थी कि आपको चाहिए कि क्योंकि जो टास्क टू होता है, मुझे नहीं पता कि मे बी ये डिस्कस हो गया हो, मैं जरा लेट आया हूँ। तो टास्क टू जो होता है, क्योंकि उसकी वेटेज डबल होती है टास्क वन की निस्बत, तो इफ पॉसिबल आपको टास्क टू पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका वर्ड काउंट भी ज्यादा चाहिए होता है, और उसको थोड़ा सा ना मैप करने में भी टाइम लगता है। तो आपको ऐसे करना चाहिए कि क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं टोटल, तो टास्क टू को अगर आप पहले कर रहे हैं, तो पहली तो बात ये कि आपको स्टार्ट ऐसे करना चाहिए कि आपको पहले जो भी आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात हो रही है, तो आपने जो भी पॉइंट्स लिखने हैं पैराग्राफ वन में और पैराग्राफ टू में, और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सारा कुछ आपने एक दफ़ा माइंड मैप बना लेना है पेपर के ऊपर, जो पेपर आपको दिया गया होता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आपको मैक्सिमम 35 मिनट्स इस पे लगाने चाहिए। इफ पॉसिबल आप 30 मिनट्स में एक दफ़ा इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसको रीड आउट करें। ठीक है, और इसमें अगर आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आपको ना खुद ही आइडिया हो जाता है जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं। अगर आपकी जो ट्रेन ऑफ थॉट है वो, मतलब अगर आपको खुद को ही लग रहा है कि मैंने बात कोई और शुरू की थी और मैं कहीं और चला गया हूँ इसको पढ़ते हुए, तो आपको, आपके पास टाइम का मार्जिन होता है कि आप उसको ज़रा सेट कर सकें। साथ में आप जब तेजी में लिख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको आप वो जो 5 to 7 मिनट्स हैं उनमें देख सकते हैं। और उसके बाद आपको ये करना चाहिए कि 35 to 37 मिनट के मार्क के बाद इसको कंप्लीट करके तो टास्क वन पे मूव कर जाएं। उसमें ये होता है कि उसमें भी पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वो किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। मतलब कि उसमें नॉर्मली आपने उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रखना होता है, बट उसमें कंक्लूजन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसमें ओवरव्यू होता है, और दो इन अ सेंस कंपैरिजन आपने करने होते हैं। ठीक है, मतलब दो पैराग्राफ्स उसमें आई बिलीव आपने लिखने होते हैं। तो लेकिन उसमें ये है कि उसमें क्योंकि नंबर्स और ग्राफ्स और चार्ट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले पेपर पे उसको समझ के मतलब पॉइंट्स बना लें कि मैंने ये चीज़ें मेंशन करनी है।
ठीक है, इन इन चीज़ों को कंपेयर करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये चीज़ें लेके चलनी है, सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये चीज़ें लेके चलनी है। और इसमें मेरे से जो मिस्टेक हुई थी एक्चुअली, एक्चुअल एग्जाम में मैंने अभी रिसेंटली दिया था, समवेयर अराउंड 21st या 22nd आई थिंक। उसमें मेरे से ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने ना ऑलमोस्ट 40 मिनट्स मैंने टास्क 2 पे लगा लिए थे। तो उससे हुआ ये था कि मेरा जो टास्क 1 था वो कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसको समझने में, उसको मैप आउट करने में और उसको बाद में लिखने में, आई बिलीव, मुझे सही से याद नहीं है लेकिन आई बिलीव कि मैंने उसका जो वर्ड काउंट है वो कंप्लीट नहीं किया था। तो उसकी वजह से मेरा बैंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो मतलब आपने ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम 35 मिनट्स टास्क 2 के लिए, और इसको पहले करने का मकसद ये है कि इसकी वेटेज डबल है। ठीक है, और उसके बाद वही जो 20 to 25 मिनट्स आपको मिलते हैं, वो आप 5 to 7 मिनट्स उसको समझने में लगा लें और उसके बाद उसको लिख लें। 150 वर्ड्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो आई डोंट थिंक इट शुड बी एन इशू कि आप मतलब 15 से 17 मिनट में उसके वो जो 150 या 160 वर्ड्स आपने करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो इफेक्ट हों। और वकास, एक, आपने कहा कि आपको बैंड अफेक्ट हुआ, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, वो प्लीज रिपीट करेंगे जिसकी वजह से आपका बैंड अफेक्ट हुआ था? अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि आई बिलीव कि मेरा जो टास्क 1 मैंने किया था, क्योंकि वो मैंने बाद में स्टार्ट किया था, और मैंने 35 की जगह ऑलमोस्ट 40 मिनट्स जो है, मे बी 41 42 मिनट्स मैंने टास्क 2 को दे दिए थे। तो जब मैंने टास्क 1 स्टार्ट किया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे हो गई थी, मैंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे क्योंकि कंफर्म नहीं है, क्योंकि दैट इज द एंड ऑफ द टेस्ट, तो आपका ना ज्यादा फोकस होता है कि आप सही लिख रहे हो और अपनी गलतियां सही कर रहे हो। तो मैंने ना टास्क 1 एंड पे किया था, तो मैंने उसके वर्ड काउंट नहीं देखा था कि वो 150 हो गया या नहीं। और आई बिलीव कि मैंने वो जो वर्ड काउंट है वो कंप्लीट नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरा बैंड इफेक्ट हुआ था। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट जो है ना वैलिड है। तो स्टूडेंट को जो है ना इसे केयरफुली लेना चाहिए। बेसिकली अगर आपकी स्पीड टाइपिंग की ठीक है तो आप आई थिंक के 25 मिनट में इजीली अपना टास्क 2 लिख सकते हैं। बाकी टाइम जो है ना आप कुछ डिवाइड कर सकते हैं अपने आइडिया डेवलप करने के लिए बिगनिंग पर, और बाकी आप कुछ टाइम उसे रिव्यू करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हमें जो भी लिमिट दी हुई है वर्ड्स की, उससे हमने कम किसी सूरत नहीं लिखना, उससे ज्यादा +- 10 हो सकता है। हाँ, उससे कम कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि वो आपकी फिर वो जो टास्क कंप्लीशन है वो नहीं होती है। बिल्कुल। जो मतलब हमने वो 4 पॉइंट नहीं डिस्कस किए, टास्क अचीवमेंट और कोहेरेंस, उनमें से जो पॉइंट 1 है वो आपका जो है ना कंप्लीट नहीं होगा। आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, मैं आज ही ऐसा किया को देख रहा था, तो वो उनके अकॉर्डिंग है कि टास्क 2 में जो आप मैक्सिमम वर्ड्स जो रीच कर सकते हैं 250 से 350 है, और टास्क 1 में आप जो मैक्सिमम वर्ड्स रीच कर सकते हैं 150 से 200 के अराउंड। टास्क 2 में, 350 तक मैक्सिमम और मिनिमम 250। हाँ सही है। और आई बिलीव कि रादर देन कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स पे फोकस करो, मतलब ये ऑफ कोर्स जो मिनिमम लिमिट है 250, वो तो आपने लिखना ही लिखने हैं ना, बट बिल्कुल। उससे ज्यादा, रादर देन कि आप उसको ज्यादा वर्ड्स लिखने पे फोकस करो, आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो इस चीज पे होना चाहिए कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसकी ये कोहेरेंस और कोहिजन वगैरह बिल्कुल ओके हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से फॉलो हो रहा हो। ठीक है, और उसमें मतलब कि किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। आप अगर 250 या 251 भी लिखते हैं तो दैट इज एज सच नॉट अ बैड थिंग, बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। दैट शुड बी द मेन फोकस। यस। उनके अकॉर्डिंग चार क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी टेस्ट को एवेलुएट करने के। पहले ये होता है कि जो भी टास्क हैं हमने उस पर कैसा रिस्पॉन्स किया है, उसका जो मेन पॉइंट होता है कोहेरेंस और कोहेजन का। उसके बाद वो चेक करता है कि आपकी ग्रामेटिकल रेंज कैसी है, एक्यूरेसी कितनी है, और सबसे मेन जो है वो वोकेबलरी जो है ना, ये मेनली चार पॉइंट्स हैं जो वोकेबलरी में राइटिंग। जी। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम सेशन आज क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल
क्लास में जो फर्दर क्वेश्चन आ गया वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।